हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हेल्थ क्यू। तो आज का ये जो वीडियो है, मैं वीडियो अपलोड ना करते हुए लाइव आई हूँ। चाहती थी कि ये लाइव सेशन इसलिए करूँ ताकि आप लोगों के जो भी सवाल है उसके आंसर्स मैं दे सकूँ, स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू बेल्स पाल्सी एंड in relation to synkinesis. So, if you have any questions, any doubts related to Bell's palsy or synkinesis, feel free to question me here and I would be ready to answer your questions related to that. स्मॉल बैकग्राउंड अबाउट मी, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट मेघना दवे। अगर आप ये चैनल में पहली बार आए हो तो मैं बहुत सारा कंटेंट बनाती हूँ बेल्स पाल्सी के रिलेटेड। मैं एक न्यूरो रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पिछले करीबन 3 सालों से मैं बहुत ही ज़्यादा डीपली बेल्स पाल्सी स्पेस में काम कर रही हूँ। मैंने काफ़ी सारे बेल्स पाल्सी पीड़ित लोगों की मदद की है, उनके लिए एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प देम रिहैबिलिटेट। तो फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है बेल्स पाल्सी मैनेजमेंट में, सिनकाइनेसिस को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें अ, वो क्योरेबल है या नहीं, बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के। तो मैं चाहती हूँ आज वन ऑन वन इंटरेक्शन करके मैं आप सारे सवालों का, आपके जो सारे सवाल है उसके जवाब दे सकूँ। हेलो वेंकट। Okay, so yeah, feel free to ask me any questions that you guys have, and I would love to answer them. We'll wait for some time for people to join. Meanwhile, I'll just give a small introduction about synkinesis. Friends, Bell's palsy is one problem, and synkinesis is another problem. ठीक है? तो जिनको synkinesis हुआ है, उनको कहीं ना कहीं डेफिनेटली फेशियल पैरालिसिस हुआ था। उसके बिना सिनकाइनेसिस नहीं होता है। बिना फेशियल पैरालिसिस के अगर आपको सिनकाइनेसिस है, दैट मीन्स इट्स नॉट सिनकाइनेसिस, देन द प्रॉब्लम इज समथिंग डिफरेंट व्हिच इज कॉल्ड एज हाइपरकाइनेसिया और एज हेमीफेशियल स्पाज्म, इस तरीके के, या ओरोमोटल काइनेसिस, इस तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, सिनकाइनेसिस इज एन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बेल्स पाल्सी, बट सिनकाइनेसिस इज नॉट अ डिजीज। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि मैम मेरा सिनकाइनेसिस क्योर हो सकता है या नहीं? सिनकाइनेसिस तब हम क्योर कर सकते हैं जब वो कोई बीमारी हो। सिनकाइनेसिस बीमारी नहीं है। सिनकाइनेसिस एक गलत आदत है जो हमारे ब्रेन ने डेवलप कर ली है जब आप रिकवर हो रहे थे बेल्स पाल्सी से उस दौरान, और उसी का आउटपुट होता है सिनकाइनेसिस। तो पहले जब मैं आपके क्वेश्चंस पूछती हूँ उसके पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि बेल्स पाल्सी क्या होता है और सिनकाइनेसिस कैसे होता है, ताकि आप समझ पाओ। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन, हाउ कैन वी सॉल्व फेस बेल्स पाल्सी? That's what I'm trying to explain you. Bell's palsy, what happens is there is a swelling or else an injury to your facial nerve. This nerve lies inside your ear, right? Now, this injury happens due to the swelling, which could be secondary to any complication or else secondary to any infection, ear infection. Okay? In many people, herpes simplex virus is a virus which is very dormant in the body. Okay? Now, when your immune system drops at that time, these virus gets activated, okay, and that leads to swelling in the ear, inflammation in the ear, and that puts pressure on the nerve gets damaged and you get facial paralysis. So the solution to facial paralysis, the first and the most important one, is taking medicines on time. Research have clearly proven that if you take your medicines within 72 hours, then your chances of recovery increases a lot. Okay, so your 72 hours are very crucial, where your nerve will start coming back to its normal shape, the swelling will start going, and you would be able to come back on your face in the like you will start your recovery process in general. But having said that, still there is no shortcut for faster recovery in Bell's palsy, because the facial nerve, the rate at which the nerve on which the pressure had happened comes back, the speed of this nerve is just 1 mm. It's just 1 mm. Okay? That's why we need to make sure that we be patient, because nerve takes its own time to slowly recover. I'll come to you. Can we do your massage or not? I'll tell everything. Okay.
So the nerve starts coming back to the normal, but every day it can only come back to the normal by just 1 mm. And that's why it is very important that you need to be patient when you have got Bell's palsy. Please don't try to go into panic or try searching for shortcuts for faster recovery. If the pressure on the nerve is less, you will see recovery in 1 week. If the pressure on the nerve is little more, you will see recovery in 15 days to 1 month. If the pressure is still more, it might take 3 months. And if sometimes the pressure is very much, it might take more than 3 months. Every individual is different, and depending on how much was the pressure on the nerve and how fast you took the medicine and how was your overall health and well-being, depending on that, the nerve recovery will depend. Okay, so this is the cure part of Bell's palsy. Now coming to your facial weakness part. Okay, so the facial weakness that you see, this is a symptom of the problem that is inside. Okay, now your nerve is damaged. That's why the nerve is not able to provide all the currents, the signals on the face, due to which your face is not able to function at this point of time. Now, what happens if the nerve is not able to provide direct currents or direct impulses? And then you try to move your facial muscles. What you will do, you will start taking power from the other normal side of muscles. So you are actually not exercising, but what you are doing is you are causing irritation on your facial nerve. That's why, if you are in early stage of Bell's palsy, please do not do forceful facial movements. Over that, what you need to do is you need to do lots and lots of facial massage. Facial massage is very important, doesn't have any side effect, and will allow your muscles to relax, stay supple, and stay flexible. So, massage is the only thing that you are supposed to do in the first 3 months of Bell's palsy. Exercises has to be done in a very graded manner, which would be initially with the support of your hand, and then gradually, once your face starts recovering back, when you start feeling contraction on your facial muscle, at that point of time you will start giving some additional support with your hand to do that facial movements. that that's how you need to do your facial exercise. But don't try to do this kind of forceful movement on your face. Got it? So that is about facial palsy in the early phase. We have one more question from Mr. Saad. जो 31 दिसंबर बेल्स palsy हुआ राइट साइड में, नहीं आपकी टाइप्स फेशियल एक्सरसाइज फॉलो की टुडे, पर्सन ठीक, बट मेरी राइट आई से लगता है जैसे आई बॉल, आई में पेन होता है, आप बताइए. आई पेन happens when your eye blinking is not proper. अगर आपकी आंखें completely बंद नहीं हो रही है, तभी आपको आई पेन होगा, क्योंकि आईज में एक्सर्शन हो रहा है. आप ये कीजिए कि आप आपकी आईज को रेगुलरली स्ट्रेच करते रहे. मैंने बहुत सारे मेरे आई केयर के वीडियो बनाए हैं, प्लीज उसको फिर से देखिए और फिर कीजिए आई केयर को. ये एक स्ट्रेच करना है, आपको टेप करना है आपकी आईज को रात के समय, ठीक है. एंड यू हैव टू अवॉइड एक्सपोजर टू हार्श लाइट. दैट विल अलाउ यू टू रिकवर from eye pain basically. Now, Rixine is asking, is this cure permanently? Bell's palsy is curable, and 90% of people, 100% get recovered from Bell's palsy without any complications. Just 10 to 15% of people who are left with complication. Okay, and they suffer from synkinesis and other secondary complications. Now, this takes me to the next point, and that is electrical muscle stimulation. Now, this is a very controversial topic. Mostly, if you are in India, most of the physiotherapists give electrical muscle stimulation. But
I personally don't recommend taking electrical muscle stimulation because there are many studies which have proven that electrical muscle stimulation is not required in the first 3 months of Bell's palsy, because that is the time where your nerve can naturally regrow. Okay. Now, when you are giving electrical stimulation, you are creating excess contraction, and somewhere you are creating disturbance in your nerve to kind of regenerate. Nerve at this point of time, lots of relaxation. It requires relaxation, it requires rest, it requires your body strength to come back. What will you do if you take electrical stimulation for more? Then the muscles will start over contracting, and this overcontracting in future leads to synkinesis. Now, this brings me to the point, what is synkinesis then? Synkinesis is nothing but a secondary complication of Bell's palsy. This is mass movement or extra movements. For example, when I have to smile, I'm just supposed to move my smile muscle. I don't need to move my eye muscles or chin muscles or neck movements, right? But in synkinesis, when you try to smile, your eyes starts getting smaller. You feel some contractions here. You feel some contractions here. So these are extra movements that is habit based. Synkinesis is a wrong habit that your brain has developed due to over exercising and overstimulation. And sometimes, if you have got a delayed recovery at that time, also due to, because you will use your mouth, right? You will eat food, you will talk to people. So, somewhere movements are happening on the face and you have not recovered. So, you develop this habit of over activating your facial muscles. So, synkinesis is not having a cure because it's not a disease, it's a habit. So, unlike any habit which can be broken, synkinesis habits can also be broken. But having said that, it's very easily said than done. Managing synkinesis is difficult, it is time consuming, and it is tough to do. It is not easy at all. Okay? And it requires lots and lots of effort from your end. You need to be very consistent in your practices in order to recover from synkinesis. Now, when I talk about synkinesis management, before that, I'll tell you what are the other options available to manage synkinesis. One of the most promising surgery that exists for managing synkinesis is called as selective neurolysis. Okay. Now, in this selective neurolysis, what is done is all the extra branches out, or else all the nerves which are causing this extra contractions on the face, they literally kind of burn it. Okay, with a curettage method. It's a very small device with which they will excess nerve endings are burned, so the nerve firing reduces to that area. That is one. But again, it's a surgery procedure, it's on face, and it's related to nerve, so it always comes with certain level of risk. That's why it's not easily done. Now, having said that, the second method, or else the common method to manage synkinesis, is Botox injections. If you must have heard that there are medical management for synkinesis, it's only Botox, nothing else. Now, Botox is not a medicine again. Botox is an what you say, a poisonous substance in one bacteria. Okay. Now, this poisonous substance in a bacteria has the power to paralyze the muscle. Okay. मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके बताती हूँ. बोटॉक्स इंजेक्शन जो होते हैं, इसमें एक बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर का जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है उसको यूज किया जाता है. ये जो पॉइजनस सब्सटेंस है, इसमें ताकत होती है हमारे मसल्स को पैरालाइज करने की. अभी बोटॉक्स में क्या किया जाता है, जो जो मसल्स आपके ओवर एक्टिव है, ओवर फायर हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्माइल करना है, कई लोगों का ये स्माइल कंप्लीट होने नहीं देता क्योंकि ये नीचे की तरफ खींचता है और ये पूरा ऊपर नहीं उठ पाता है, राइट? सो दिस इज एन ओवर एक्टिव मसल, दिस इज एन ओवर एक्टिव मसल, दिस इज एन ओवर एक्टिव मसल, दिस इज एन ओवर एक्टिव मसल. तो ये जो एरियाज होते हैं, वहां पे बोटॉक्स को कुछ मात्रा में, बहुत ही छोटी मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि उसमें हल्की सी वीकनेस लाए. क्योंकि यहाँ जो होता है ना सिनकाइनेसिस में, जो पहले कमजोर थे मसल, अभी यही मसल ओवर एक्टिव हो गए, वो ज्यादा ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं.
ठीक है? तो हमें इनको रिलैक्स करना है, न्यूट्रलाइज़ करना है, नॉर्मलाइज़ करना है। तो इस तरीके से आप बोटॉक्स की मदद से आपके मसल्स को नॉर्मलाइज़ कर सकते हो। लेकिन बोटॉक्स थेरेपी टेम्पररी है। बोटॉक्स थेरेपी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हर एक बोटॉक्स इंजेक्शन का एक ड्यूरेशन होता है, डिपेंड कितना क्वांटिटी, कितने यूनिट्स का बोटॉक्स आपके फेस में इंजेक्ट किया गया था। मोस्टली बोटॉक्स का जो असर होता है वो 3 से 5 महीने के ड्यूरेशन तक के रहता है। तो 3 से 5 महीने की ड्यूरेशन तक के आपका बोटॉक्स का असर रहेगा, फिर आपका फेस फिर से वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए आपको फिर से बोटॉक्स लेना पड़ेगा। तो अब आता है दूसरा सॉल्यूशन कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो टफ सॉल्यूशन है, बट इज अ मोर सेंसिबल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा। पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो पहले मसल्स आपके जो बहुत ही ज़्यादा टाइट थे, सॉरी बहुत ही ज़्यादा वीक थे, कमज़ोर थे पैरालिसिस के वजह से, अभी ये धीरे-धीरे और ज़्यादा एक्टिव और हाइपर एक्टिव होने लगे हैं। तो ये जो पहले फेस नीचे गिरा हुआ था, अभी ये एक्स्ट्रा ऊपर गिर रहा है। आपको यहाँ से भी पुल दिखेगा, यहाँ से भी पुल दिखेगा, यहाँ से भी पुल दिखेगा। राइट? एक टिपिकल सिनकाइनेसिस का केस हम देखते हैं, तब हम अगर उनको उनका पिक्चर जब एनालाइज करते हैं, तब बहुत ही आसानी से ये ब्रो का एक जो आईब्रोज होती है लेवल में नहीं होती। जो सिनकाइनेसिस की साइड वाली आईब्रो होती है थोड़ी सी उठी हुई होती है और ये नीची दिखती है। कई लोगों में एक दूसरी तरीके का भी सिनकाइनेसिस होता है जिसमें ये आईब्रो ड्रूप हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइटनेस होता है और ये आईज जो है ये छोटी दिखने लगती है। ओके, वो एक दूसरा प्रॉब्लम है, बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिनकाइनेसिस। ठीक है, तो अभी ये हाइपर एक्टिव मसल्स है, इन्हें हमें धीरे धीरे रिलैक्स करना पड़ेगा। ओके, कैसे रिलैक्स कर सकते हैं? फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट, आई वुड से सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हो आपके लिए, वो है मेडिटेशन। इट साउंड्स क्लीशे, लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में मेडिटेशन को ऐड करते हो, रेगुलरली मेडिटेट करते हो, तो आप एक आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन सीखते हो, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके फेस के मसल्स हाइपर एक्टिव है। इन्हें हमें काम डाउन करना है, कूल डाउन करना है। इसीलिए मेडिटेशन फर्स्ट रैंक में मैं दूंगी, अगर हमें सिनकाइनेसिस मैनेजमेंट की बात करनी है तो। दूसरी चीज जो आपको रेगुलरली करनी है, अगेन ऑन दिस केस वुड बी फेशियल मसाज। फेशियल मसाज इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपके मसल्स की टाइटनेस को हमें कम करनी होती है, इसीलिए। थर्ड आती है फेशियल स्ट्रेचिंग। आपको फेशियल स्ट्रेचिंग को ऑन अ रेगुलर बेसिस करनी पड़ती है। फिर आती है सिनकाइनेसिस कंट्रोल एक्सरसाइजेस। यहाँ आपको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सिनकाइनेसिस कंट्रोल एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन से करनी पड़ती है। अगर वो आप थोड़ी सी भी ऊपर नीचे गलत कर देते हो या ज़्यादा कर देते हो, आपका सिनकाइनेसिस बढ़ सकता है। That's why you need a specialist who can help you out to teach and give you the right exercise at the right time. सिनकाइनेसिस कंट्रोल एक्सरसाइज का एम होता है हमारे फेस को सिर्फ इंडिविजुअल मसल कॉन्ट्रैक्शन सिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्माइल करना है ऐसे, तो मेरे कुछ ही मसल होते हैं जो स्माइल मसल्स होते हैं, यही कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। देयर इज नो नीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अदर मसल्स। सो सिनकाइनेसिस कंट्रोल एक्सरसाइज में ऐसी एक्सरसाइज को यूज किया जाता है जिसमें मसल्स को ट्रेन किया जाता है इंडिविजुअली मूव होने में और बाकी एक्स्ट्रा मूवमेंट्स को मिनिमाइज करने में। फिर आती है बारी न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन की। न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन में बेसिकली हमारे इमोशनल सेंटर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि अक्सर हम फेस मसल्स जो है वो हमारे इमोशनल सेंटर को ज्यादा यूज करते हैं। वी डोंट यूज आवर लॉजिकल ब्रेन मच व्हेन इट कम्स टू फेस। हमारे एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक आते हैं, नेचुरल आते हैं। हम अक्सर सोच के स्माइल नहीं करते, हम स्पॉन्टेनियसली स्माइल करते हैं।
इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप सनकाइनेसिस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, हमें न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है, जहाँ इमोशंस को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइजेस की जाती है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट बारी, वो होती है ग्रेडेड मोटर इमेजरी। दिस ऑल्सो यूज लॉट ऑफ इमेजिनेशन बेस्ड एक्सरसाइज, लॉट ऑफ मिरर बेस्ड एक्सरसाइज। लेकिन उसमें मिरर का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप मिरर के सामने देख के एक्सरसाइज, नहीं, ऐसे नहीं होता। इट इज़ अ वेरी ग्रेडेड एक्सरसाइज वेयर यू नीड अ थेरेपिस्ट्स हेल्प। इसीलिए आपने देखा होगा मैं बेल्स पाल्सी के इनिशियल फेज के वीडियोस ज़्यादा बनाती हूँ, सिनकाइनेसिस के नहीं बनाती, क्योंकि सिनकाइनेसिस एक ट्रिकी प्रॉब्लम है सॉल्व करना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी। और अगर हम कुछ भी थोड़ा सा भी गलत कर देते हैं, वो आपके सिम्टम्स बढ़ा सकता है। इसलिए ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड इन मैनेजिंग सिनकाइनेसिस और उन्हें फॉलो करें। बट एक चीज जो मैं कहूंगी, जिसका सही में बहुत ही ज्यादा, आई वुड से 60% से भी ज्यादा बेनिफिट है सिनकाइनेसिस मैनेजमेंट में, तो वो है मेडिटेशन। सो पूरा की टेक अवे है मेरा इस आज के इस लाइव वीडियो सेशन से कि प्लीज मेडिटेशन प्रैक्टिस को इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफस्टाइल में। रोज मेडिटेट करें। अगर पूरे दिन में 2 बार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक बार करें, बट करें जरूर। मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड है मेडिटेशन का, सिल्वा मेडिटेशन मेथड। SILVA, सिल्वा मेडिटेशन मेथड। आप यूट्यूब कर सकते हो, आपको बहुत सारे गाइडेड वीडियोस मिल जाएंगे इस पे। आपको सिर्फ हेडफोन लगा के उस मेडिटेशन प्रैक्टिस को सुनना है, और धीरे धीरे आप देखना आपके फेस में कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। Okay, so yes, this is what is synkinesis management about. So now I'm open to questions. हम लोग 10 minutes का क्विक Q&A रखते हैं। आपको कुछ भी सवाल हो सिनकाइनेसिस के रिलेटेड, बेल्स पाल्सी के रिलेटेड, प्लीज हम लोग उसी पे स्टिक रहते हैं। और कोई कंडीशन के बारे में आज बात नहीं करेंगे। आई डू अनदर लाइव सेशन अगर हमें और कोई कंडीशन के बारे में बात करनी हो तो प्लीज put your questions on synkinesis. Feel free to ask me. I'll read and answer them. Yes, so okay, Erin Chan is there. I have Bell's palsy for 2 years and developed synkinesis. What can I do to reduce synkinesis and recover my Bell's palsy quicker? Hi, Erin. Again, the same thing. Please don't look for any shortcuts. There are no shortcuts, unfortunately, available right now. Okay, whatever who is promising you shortcuts are actually a scam. To be very honest, no medical study till now has shown. The only shortcut that exists is a surgical option, which is called as selective neurolysis, for which you need to find a very experienced doctor who is who know his job well. Okay, so that would be there. But apart from that, as I said, you need to do a lot of meditation, you need to do a lot of massages, you need to do a lot of stretching exercises, you need to learn synkinesis control exercises on a tapered doses, and you need to also develop the habit of using your emotional center more than your logical center. That is what will help you to manage your synkinesis. I hope that answers your question. Okay, Melvin Prakash D'Souza is there. What's your thoughts on galvanic current with the controversy in research? Yes, galvanic current, Faraday current, nothing is advisable on Bell's palsy, at least for initial 3 months. The RCT, randomized controlled trial study, which is done in complete research, even the textbook of facial nerve has mentioned this, that we should wait for 3 months for complete nerve recovery to happen. Then, only if the face shows no sign of recovery, then only try galvanic stimulation, not even Faraday stimulation. And I'll tell you one more reason why electrical stimulation should not be done. Now, this face is a very complex space. At least here, the muscles are still superficial, but here, all the muscles are overlapping. Okay, now what happens if you are not putting at right motor points, right? This will lead to overstimulation
of certain group of muscles. Okay, this overstimulation leads to mass movements in further action, and that causes synkinesis. So, to according to me, I never recommend electrical stimulation, at least in the first three phase. And synkinesis, there is no point in giving electrical muscle stimulation because here we don't need to strengthen the face; we need to relax the face, which are overactive. Provesh. Hi, Provesh. Hi, Devesh. Okay, Poonam is there. I got Bell's palsy in pregnancy and it's been 14 months. Have some kinesis from last 8 months. My specialist suggests me to do Botox treatment. Would you be able to guide me for Botox treatment, please? Yeah, Poonam, I've just spoken about Botox therapy. As I said, Botox is uh, a poisonous substance that is present in a bacteria. Okay, that poisonous substance is injected in a very small quantity on your face to create a temporary weakness. Okay, so this Botox is given on overactive muscles which are there on the face. So that will definitely help you out, but for a temporary point, because Botox has its duration. So, for example, if a Botox is given here or else here, right, that is given in certain dose in units. So that unit's effectiveness lasts for somewhere between 3 months to 4 months, and then slowly it starts going back. So then again you need to do. Why not Faradic? Faradic, anyways, in denervated muscle is not used. Okay, Faradic will do group muscle contraction. We have to avoid group muscle contraction. So Faradic stimulation is also not advisable. If you understand, I think, Melvin, you are a physiotherapist. So if you understand the pathophysiology behind Bell's palsy and how facial nerve functions, you will understand why electrical stimulation doesn't make sense. Yes. Anything else? Okay, so I think I've answered all the questions. Okay. Yeah, Melvin, I got it that you are a physiotherapist. Um, uh, if you really want to study this, go deep into it, um, you will find a lot of studies, authentic studies, that will say don't use electrical stimulation. And nowhere in US, UK, NHS, even the Facial Palsy Organization, which is a core deep research body on facial palsy rehabilitation, says electrical stimulation is not advisable. Okay, so Poonam is asking, so is that every after few months I have to do Botox and it's not? No, Botox is not a permanent solution. You have to take Botox after every few months. That is the drawback of Botox therapy. Hi Vilas, how are you? Okay, I'm doing synkinesis exercise from right now. I'm getting slight pain below ear side. Okay, so when you are getting pain below ear side, that means tightness is developing and you need to do some more stretches on the ears. Okay, so mostly ear, this area, right, this is very commonly tight. Okay, so what I would suggest is do a circular massage in this way wherever you have pain. Okay, first take hot fermentation. After hot fermentation, take circular massage with two fingers in the painful area, and then you stretch your ear in this way. Hold for 30 counts and then come back. Again, stretch, hold for 30 counts, then come back. Like this, you do 3 repetition and increase that repetition for 2 or 3 times in a day. Vilas is my patient, so I know his problem. So yeah, that's why I'm able to answer that. I hope it answers Vilas. Okay, Athin Aryan, what do do, ma'am? I'm suffering from synkinesis. Athin, I mentioned you should do first. You need to do an assessment. If you feel like, you can reach out to me. I have always shared my email ID. We can do one-on-one assessment. I can see and let you know at what stage and how severe is your synkinesis, and basis that I can cater, like I can tell you what are the steps individually you are supposed to do. That is something that will work for you. Miss Ria Munir, hello madam. Uh, I caused Bell's palsy 3 months. What do I do? Okay, 3 months. How much is the recovery, Miss Ria? Most welcome, Vilas. Thank you so much for joining. Melvin, there is no typical
textbook as such for facial paralysis management, but yeah, there is a very beautiful textbook on facial nerve. Try to search it on YouTube, like on internet. You will get some e-copy of that. Read that book, and there are lots and lots of research paper, and that requires a lot of initial work. It's not easily available. It's an under research space, so you will require a lot of work on that. Yes. So yeah, I hope that answers. Okay, guys. So I think I was able to answer your queries. We will be keeping on the live chat for still more 3 minutes, and then I'll sign off. Meanwhile, if you have got any questions, feel free to ask. Okay, I'm doing your exercises and physiotherapy. Okay. I'm 95% of recovery from Bell's palsy, but still next side. So I think you are having synkinesis if I'm not wrong, right? And the neck area is also supplied by facial nerve and is also very easily being affected by synkinesis. So this tightness is very common. What I would say is, again, start with meditation, start with a lot of facial massage, and also start with a lot of stretch on the neck muscle. One stretch that you can do is just keep two hands this way, turn your neck on the opposite side, and just protrude your jaw in this way. When you protrude, you will feel a pull. Okay. If you feel it painful, you can stop that. You can just do this much. Hold for 30 counts and then come back. Do it for 3-4 times in a day and you just observe the difference with that. Okay, Miss Riya, 3 months, कितना रिकवरी हुआ है आपका अभी तक के? क्या 100% रिकवर हो गए हो या थोड़ा सा वीक लगता है? I have fever and lose motion at this time. It causes Bell's palsy. ओके, सी बेल्स पाल्सी में फीवर हो सकता है, लूज मोशंस का बेल्स पाल्सी के साथ कोई कनेक्ट नहीं है. इट कुड बी अदर कंडीशन. सो आई वुड सजेस्ट आप पहले डॉक्टर को ठीक से अपना जांच करवाइए, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, और स्टिल अभी मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए, मसाज कंटिन्यू रखें. ठीक है, एक्सरसाइजेस ज्यादा ना करें. एक्सरसाइजेस फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए बेटर नहीं है. आई एम सॉरी मिस्टर, आई डोंट नो मलयालम. Mr. What I'm advising you is, don't uh, do exercises at this point of time. Just do more of facial massage and lots of breathing exercises. And you can do some stretches on the normal side of the face. That's it. You should still do. You should still wait for. Um, uh, you should still wait for natural recovery to happen. Is there any life for physio student? Melvin, to be very honest, I'm not into academic side. I'm totally into clinical side, so I don't think I'm coming anything with for physio students as of now. Maybe in future I'll see, but I'm still, even I'm into research. I'm still researching and trying to come up with better solutions for Bell's palsy. Till now, whatever I've reached, I'm trying to give it back to my patients. That's what I'm doing. But still, there's a lot of work that is required. And that's why no one is actually coming out and teaching about Bell's palsy to physios, because everybody is still trying to figure out and come up with solutions. Okay, Chin, Chindana is asking, not able to get equal pressure to close eyes on one side of the face. Yes, this is also a very common question. So when equal pressure on one side of face is not happening, that means your eyes are still not blinking at a proper speed. So what you need to do are two things. One, eye stretching. So pull your eyelid this way and then close your eyes. Hold for 30 counts and then relax. Again, pull your eyes, hold for 30 counts, then relax. Again, pull your eyes, hold for 30 counts, relax. Do 3 times. And the second is eye exercise. I've already made a video on this. Try to keep your finger here, look up, look down, keep looking down, and gently close your eyes. Look up, look down, keep looking down, and gently close your eyes. Look up,
Look down, keep looking down, and gently close your eyes. Do this 3 4 times in a day. Slowly, slowly, your eye pressure will improve. But be patient again. Okay, Mr. Vijay is asking, I want to take treatment in your guidance. Yes, you can reach out to me. My email ID is meghna@meadow.healthconnect.com. On any of my videos, if you go to the description box, you would be able to see my email. Feel free to send an email requesting for an appointment. We will schedule an one on one video consultation, and in that video consultation, I would be able to guide you. Okay. Ms. Ria Munir, you need to see a neurologist. That is one of my highest recommendation based on all the symptoms that you're telling me. It's very difficult to just give you a solution without checking you. And you need some medical help first. Okay, guys. So I think that's what is for today's session. I hope it was insightful, helpful. I would try coming back over and over again, like with like this kind of live session. If you like today's session, please hit the like button like this. So I will get motivation to do more sessions like this. And yeah, that's it. Feel free to email me if you have any doubts. And I'll see you in another live session. Bye bye.